हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और जो नेशनल इनकम था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था, वो थोड़ा सा मैं मिस कर गई थी। मिस क्या कर गई थी, मैं सोच रही थी पहले आपको क्वेश्चंस करा लूं, बट स्टिल क्वेश्चंस में तो बहुत टाइम लग रहा है। इट इज टेकिंग अ वास्ट टाइम, अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट all the unsolved questions, but I've promised you that I will finish all the unsolved practicals, provide you all the solutions of that. So, keeping my promise, I'm just trying to complete all the unsolved practicals with solutions. Okay, and still we have few many more questions left, like 43. From 43 we have to start. Okay, but before that, what I'm going to do, the this part. Okay, national income at current prices and constant prices. Okay, it's a very important topic from the chapter. Okay, national income. ओके, सो व्हाट वी आर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में से है, इसमें आपके क्वेश्चन जरूर आता है, न्यूमेरिकल भी आता है एंड थियरी भी पूछी जाती है, एंड स्पेशली वेलफेयर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस इट। ओके, सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द दिस वन, दैट इज द, जो मैं मार्क करूंगी आप उसी का मीनिंग समझ लेना। राइट, वही आपको मीनिंग लिखना भी होगा एग्जाम में। इफ इट इज आस्क्ड 1 or 2 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स। ओके, बट इट विल डेफिनेटली बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, it is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year। यानी कि जो भी आपकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है जो आपने नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस करी एक साल में, एंड मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर के ही प्राइसेस होंगे। और क्या होगा, वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ये सब आपका कॉमन रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस में। बट द वैल्यू इज मेजर्ड टेकिंग द करंट ईयर बेसिस। ओके, करंट ईयर के प्राइसेस पे जो आप करते हैं, दैट इज द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2025 एट द प्राइसेस ऑफ 24 एंड 25, यानी जो करंट ईयर आपका चल रहा है उसी बेसिस पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, दैट इज नोन एज द नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल नेशनल इनकम। ओके, नॉमिनल जरूरी याद रखना। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर। इसका ड्रॉबैक क्या है, दैट इज द, इफ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय current at current prices, or we calculate the nominal national income, then what is the drawback behind this? It does not provide you the true picture of the economic growth of the country, as increase in nominal national income may be due to rise in price, हो सकता है इन्फ्लेशन हो गया हो, एंड विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट, यानी कि जो क्वांटिटी आपकी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है उतना, बट देर इज ओनली राइज इन प्राइजेस। Okay, so very important point for this. So in order to eliminate the effect of price changes, okay, so अगर हमें देखना है कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई नहीं हुई है, या फिजिकल आउटपुट इंक्रीज किया नहीं किया, वी ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। गॉट इट? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ, देखो सेम वही डेफिनेशन है, इट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, ईयर तक, इट इज सेम इन बोथ, ओनली यू हैव टू चेंज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे करंट ईयर से होता है, यहाँ पे बेस ईयर से होता है। डिफरेंस इज ओनली दिस। ओके, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी कि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। प्रेजेंटली 2011 टू 2012 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बेस ईयर हम मानते हैं, तो 2011 टू 2012 is considered as the base year। Okay, sometimes it is asked। Okay, if we measure India's national income of 24-25 at the prices of, अगर हम prices यहाँ के ले लेंगे इस साल के, then it is termed as a national income at constant prices। ठीक है, करंट का मतलब क्या हुआ, अभी जो चल रहा है, तो वो हमारी ट्रू पिक्चर नहीं शो करता है इकोनॉमी की। इसमें क्या करता है, ट्रू इकोनॉमिक पिक्चर शो करता है, जस्ट बिकॉज इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो लिखा भी है, as an increase in real national income is due to increase in output, यानी कि नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज कर रही है, बट अलोंग विद द, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द आउटपुट ओनली। ओके, एंड इसका दूसरा नाम है रियल नेशनल इनकम। ओके, दोज हु डोंट हैव द बुक, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में भी इसका
सिनेमन भी पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज द सिनेमन ऑफ और व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस वन, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. सो आप कह सकते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम. और रियल नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस. ओके, नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट. Why do we measure national income at the prices of the base year? Now, this is also an important question. Make it a point कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. ओके, यही छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं, राइट? So they need for estimating the need for estimating national income at constant prices rises because national income at current prices may give a misleading picture of economic performance if the prices are continuously rising or falling. Okay. With high rates of inflation in India, nominal national income may create a false sense of economic growth. तो ये क्या होता है, नॉमिनल से आपको फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमी, आपको लगेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट एग्जैक्टली दैट्स नॉट पॉसिबल. नाउ वी विल जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल illustration this can be also asked in the numerical portion. Okay, this kind of question इस तरह का आ सकता है. तो आप इस तरह आपको टेबल मिलेगा, देन हाउ यू आर गोइंग टू टेल, दैट इज फॉर एग्जांपल आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस 24-25 मिल गया और करंट ईयर प्राइस आपको ये मिल गया, राइट? और बेस ईयर प्राइसेस ये मिल गया. नाउ दे विल आस्क यू दैट tell there if there is an economic growth in a country or not. तो आप कैसे बताएंगे उसको? Let's see here. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपके प्राइस है P1, और ये आपका पुराना प्राइस है. ओके, जो कि हम बेस ईयर लेते हैं 2011 टू 2012. ओके, सो अब क्या करेंगे हम, मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस का मतलब जो क्वांटिटी आपने पहले की थी, क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइसेस में बस चेंज आए. प्राइसेस हमने करंट ईयर के लिए लिए, अभी के. तो व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1000 इनटू 20, सो यू विल गेट 20,000. क्लॉथ का क्या था, 500, क्वांटिटी सेम है देखो, ठीक है, लेकिन क्या है, 25 रुपए मीटर है. तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, देन विल गेट 12,500. नाउ सिमिलरली हम इसी तरह टेबल बना के अपने आंसर में बनाएंगे, ठीक है. नाउ हियर इट कम्स क्वांटिटी इनटू प्राइस, दैट इज 40. तो ये हमने इसका सबका टोटल किया, वी विल गेट 42,500 इज द करंट. ठीक है, करंट वाला निकला है ये. अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट वाला निकालना है, राइट? तो हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट में, दैट इज अगेन क्वांटिटी तो आपकी सेम रहेगी, बट प्राइस वी विल टेक ऑफ दिस. ठीक है, इसका प्राइस लेंगे, पुराने वाले का, पीओ का, ओल्ड वाले का. सो 1000, ठीक है, क्वांटिटी प्रोडक्शन किया था और पहले प्राइस कितना था, 12 था, तो यानी कि 12,000 आ गया. देन सिमिलरली 500 इंटू 25, यू विल गेट 7,500. सिमिलरली 30, आप 30 ना लिखो बल्कि पहले क्वांटिटी लिखो. ओके, क्वांटिटी कितनी थी, दैट इज 250 लीटर्स था, और कितने रुपए हमें लीटर मिलता था, 30 लीटर. ओके, तो 7,500. वन वी आर गोइंग टू ऐड ऑल दीज, वी विल गेट 27,000. इन सबको ऐड करेंगे. नाउ द डिफरेंस, सी द डिफरेंस, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं, बट द प्राइस फ्लक्चुएट्स, राइट? द प्राइस फ्लक्चुएट्स. दिस शोज दैट दिस इज द व्हेन वी कैलकुलेट द करंट ईयर प्राइसेस. ओके, तो क्या होता है, आपको कभी भी एग्जैक्टली सही पिक्चर नहीं मिलती दैट देयर इज इकोनॉमिक growth or not in your country. Okay, so it may create a false sense of economic growth. आपको तो लग रहा है ना कि अरे इतना बढ़ गया. No, the difference is this. Now you will see what national income of 24-25 at current price, current year prices is 42,500. You know how to calculate now. ठीक है, and at the base year prices 27,000 for the same level of output. Now level of output is not changed. Okay, level of output जो आपका मेन है, level of output में ही changes अगर आते हैं तो क्या होता है, आपको देखना बस यही है कि लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट चेंज, नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. ओके, द डिफरेंस इज 15,500. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, 42,500, 27,000, then we will get this amount, that is 15,500 is not real. It does not give a true picture of economic growth as the increase is merely due to rise in prices. देखो प्राइस में चेंज हो रहा है, ये 20 रुपए केजी हो गया तो ये 12 था, ये 25 था, ये 15 था, ये 40 था, ये 30 था. सो नाउ यू आर एबल टू सी द डिफरेंस. ओके, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे. प्लीज मेक इट अ हैबिट to do by making this kind of a chart like this only, and then you are going to get the answer, and then you can just write this. आप इसमें बता सकते हैं कि true picture दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, because there is a difference just due to rise in prices. Okay,
Now, so real growth of an economy can be measured only through national income at constant prices. So that's why we always consider constant prices. National income should be calculated at constant prices, and it is the best thing to know the economic growth. Okay. Now, another thing is what? Conversion of national income at current prices into constant prices. हम कैसे convert कर सकते हैं? This can be done by eliminating the effects of price change on national income with the help of suitable price index. एक price index के through कर सकते हैं. Price index क्या है? Index number which shows the change in price level between two different time periods. Okay, it indicates whether a rise or fall in national income from one year to another is real or not. अब कैसे हम इसको शो करते हैं? इसका सिर्फ सिंपल आपके मीनिंग आ सकता है एंड बेसिकली क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है, so उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, एक इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी, यू नीड टू कैलकुलेट दैट. फॉर्मूला आपका ये रहेगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. नाउ फॉर एग्जांपल इफ प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150, देखो प्राइस इंडेक्स क्या दिया है 150, तो हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी विल पुट द वैल्यू 150, देखो यहाँ पे लिख दिया, एंड एट द करंट प्राइस इज 1,50,000 crores. So we'll just put the value here. Now they are asking you need to calculate national income at constant prices. तो जब इसको आप simplify करोगे you will get 1 lakh crores. Got it here? Now very quickly we are going to just do this. That is a very important difference between income, national income at current price and national income at constant price. Okay. करंट का मतलब जो अभी साल चल रहा है उसका होगा, कांस्टेंट का मतलब आपका हो जाएगा लास्ट का, स्पेशली 2011 टू 2012. 2012 इज बेसिकली द बेस ईयर. ओके, ना मीनिंग इट रेफर्स टू द, देखो सब चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे क्या होगा, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइजेस एंड मेजर्ड एट प्राइजेस ऑफ बेस ईयर. refers to money value of binary goods and services, वही सेम चीज लिखी है जो अभी हमने रीड करी हुई. प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. ओनली द चेंज इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस एंड इट इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस. कांस्टेंट हमेशा बेस ईयर पे होगा, करंट हमेशा करंट ईयर पे होगा. इंडेक्स क्या होता है? इट इज नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. जाहिर सी बात है, अभी आपने डिफरेंस देख लिया. It is a better tool for measuring the economic growth of the country. Causes of changes, national income at current prices, change in both price and quantity affected होता है. यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ change in quantity होता है constant prices में. Current price में क्या होता है, it is not suitable for comparing the national income of different years, whereas it is used for comparing the national income of different years. Now calculation क्या होता है, current price को आप जो है करंट क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई कर देते हो, बट हियर इन बेस ईयर द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड विथ करंट क्वांटिटी. ओके, प्राइस हम बेस ईयर के लेते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉमिनल नेशनल इनकम इसको कहा जाता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को, एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज आल्सो नोन एज द रियल नेशनल इनकम. दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट हियर, मेक इट अ पॉइंट कि आपको ये जरूर से पता होना चाहिए. इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपके थ्योरी में 1 मार्क के भी, एंड ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला भी इसमें गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन हियर. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. Now nominal GDP and real GDP, right? Nominal GDP and real GDP is what? When GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year. Current का मतलब same year पे जब हम calculate करेंगे, it is called a nominal GDP. ठीक है, तब जीडीपी हमारा कैलकुलेशन होता है, एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर. जब बेस ईयर लेके चलेंगे दैट इज नोन एज अ रियल जीडीपी. ठीक है, सो आगे इसको देख लेते हैं. नॉमिनल रियल जीडीपी इज मोर देन, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सब देखिए बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं नहीं चाहती थी इसको स्किप करना, इसलिए मैंने अभी से करा दिया था कि बच्चे इसमें और अच्छे से कर लें. प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज मोर देन प्राइस लेवल इन करंट ईयर, यानी कि इसमें क्या, रियल जीडीपी अगर ज्यादा है नॉर्मल जीडीपी से, तो इसका मतलब है कि प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज मोर देन द प्राइस लेवल इन करंट ईयर. अगर रियल जीडीपी इक्वल है आपके, ये पूछा जाता है कि व्हेन इज रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, तो इट मीन्स व्हाट, दैट इज प्राइस लेवल इन बोथ द ईयर इज सेम, कोई भी प्राइस चेंज नहीं हुआ है. व्हेन रियल जीडीपी इज लेस देन नॉमिनल जीडीपी, इट मीन्स द प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज लेस. पिछले साल का जो 2011 और 12 का प्राइस ईयर होगा वो कम हुआ होगा देन द प्राइस लेवल इन द करंट ईयर. नाउ व्हिच इज बेटर, नॉमिनल और रियल? तो आपको ये बता ही चुके हैं कि रियल इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट provides you the true picture of the economic growth of a country. Okay, और भी क्या रीजंस हैं, कंपैरिजंस करता है, इंटरनेशनल करता है. नाउ वी जस्ट रीड इन डिटेल, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स गिवन, मैटर गिवन इन द
book. Okay, which is better, nominal or real GDP? Real GDP is better as compared to nominal GDP because of the following reasons. Real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services as it is affected only by change in physical output. तो real में क्या होता है, सिर्फ change in physical output ही affect करता है. On the other hand, nominal GDP can increase even without an increase in physical output as it is affected by change in prices also. नाउ अगर आपके और रीजंस क्या हैं, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स, यानी कि एक साल से दूसरे साल में या एक साल से 5 साल के बाद आउटपुट आपका कितना इंक्रीज करा है, यू विल नो द डिफरेंस. ओके, and real GDP also facilitates international comparison of economic performances across the countries. I have already told you. Therefore, real GDP is better than the nominal GDP as it truly reflects the growth of an economy. Basically, growth of an economy आपको जब भी आपको देखना है, you need to know the real GDP, or you can say the constant prices. Okay, now how we are going to find out determination of nominal GDP and real GDP. देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला एक आपका है, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इनटू 100. या अगर नॉमिनल जीडीपी को हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100. इसमें से दो चीजें आपको गिवन होंगी, राइट? और नॉमिनल जीडीपी फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100 अपॉन 100. तो देखो ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा ना, प्राइस इंडेक्स इस तरह कर देते हैं ना, multiply करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, and then we need to know the nominal GDP. Now, example for better understanding, estimate the value of nominal GDP for a hypothetical economy. यानी कि हमें करना है calculate nominal GDP, right? The value of real GDP and the price index are given as 500 and 125 respectively, right? तो हमें रियल का क्या वैल्यू मिला है, 500. सो वी विल पुट द फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इन 200, सेम फॉर्मूला. नाउ विल पुट द वैल्यूज, जो हमारे पास वैल्यूज है, रियल जीडीपी का गिवन है वैल्यू, दैट इज 500 इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मुझे कैलकुलेट करना है, आई जस्ट राइट इट लाइक दैट, upon price index is 125, and then when we are going to cross multiply that, तो nominal GDP एक तरफ ले लेंगे, is equals to 500 into 125 upon 100. So 625 crores is the nominal GDP. Okay. Now next is what GDP deflator या प्राइस इंडेक्स. अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जाएगा कि आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है या जीडीपी डिफ्लेटर. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर द सेम थिंग. ओके, द सेम थिंग है, मतलब आपको ये चाहे इस नाम से बोलो जीडीपी डिफ्लेटर या बोलो प्राइस इंडेक्स. ओके, तो कंफ्यूज ना होना, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको याद रखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर नॉमिनल पहले आता है, एन पहले आता है, आर बाद में आता है. तो सिंपल आप इसका बस ये बोल दोगे, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. परसेंटेज में निकालोगे, राइट? इनटू 100 जरूरी है, मस्ट है, वरना आंसर आपका सही नहीं आएगा. सो एन अपॉन आर याद रखो, या नॉमिनल अपॉन रियल. रियलिटी हमेशा रहती है, ठीक है? जो भी याद चीज आप रख सकते हैं, जैसे किसी भी तरह से आप इसको आसान ट्रिक से याद रखिएगा. एज वी हैव सीन, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंजेस इन प्राइस एंड फिजिकल आउटपुट. On the other hand, real GDP is affected by change in physical output only. तो देखो ये डिफरेंस भी दोनों का बता रहे हैं. To eliminate the effect of price changes and determine the real change in physical output, we can use GDP deflator. ठीक है, तो GDP deflator इसलिए यूज होता है. It measures the average level of prices of all goods and services that make up GDP. It is the ratio of, now very important, it is the ratio of nominal GDP to real GDP of current year, right? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीडीपी आपको दिया गया नॉमिनल 15,000, सो विल पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड रियल जीडीपी इज 12,000 इंटू 100, सो यू विल गेट 125. 125 का मतलब क्या है, आपके 100 रुपए प्राइसेस थे जो कि अब 25% बढ़ गए हैं, राइट? 25 shows that the general price level has increased by 25%. It must be noted that the GDP deflator indicates changes in price level related to all goods and services produced within a domestic territory of the country. यानी कि 100 के ऊपर जो भी आएगा ना, जैसे 125 आया, मान ले कहीं पे 110 आएगा, तो इसका मतलब है 100 तो आपका है ही वो ऑलरेडी प्राइसेस का, बट 25 एक्स्ट्रा जो आ रहा है या 10 एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज द इंक्रीज और चेंज इन प्राइस लेवल. ओके, नाउ similarly, in the given example, we can also convert nominal GDP into real GDP through GDP deflator. For example, real GDP अगर मुझे calculate करना है, what I'll do?
दैट इज 15,000 अपॉन 125 जो मैंने प्राइस इंडेक्स निकाला था। जीडीपी डिफ्लेटर इज द प्राइस इंडेक्स इन 200, तो मुझे मिल जाएगा 12,000 करोड़। वही इसका आंसर देखो आ जाएगा जो हमें स्टार्टिंग में मिला था। Like GDP deflator, we can also estimate GNP deflator as follows. तो GNP deflator आप nominal upon real into 100 कर दोगे, right? Now GDP and welfare, it is a very important topic. This one, you must know the difference between and how GDP helps in attaining the welfare, या GDP की वजह से कैसे आप बता सकते हैं कि welfare हो रहा है नहीं हो रहा है, and they are connected. Okay. Now GDP is often considered as an index of welfare of the people. Welfare means a sense of material well-being among the people. Welfare is generally measured in terms of availability of goods and services per person. It means सबको मिल रही है वो goods and services or not. An increase in the real GDP means increase in the physical output in the economy. That is greater per head availability of goods and services, which means higher level of welfare of people. So if every individual in our country is getting the proper sense of raw material well-being, okay, that is proper availability of goods and services per person. अगर ये हमें मिल रहा है, that means we are going to the welfare mode. Okay, welfare हमें achieve कर रहे हैं, which means higher level of welfare for the people. So higher GDP is generally taken as greater welfare of the people. Okay, now इसमें क्या क्या हम देखते हैं, limitations and reason। हम कभी कभी हो सकता है ये चीजें सही ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीजेस, दैट इज रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। सो इफ द विद द राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इंक्रीजेस, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, अगर इनइक्वालिटी आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक अच्छे एरिया को और प्रमोट कर रहे हो, और जो बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है या पुअर पीपल है, उनको आप ऐसे निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, देन इट विल नॉट बी टर्म्ड एज द विद द इंक्रीज इन द वेलफेयर। ओके, जीडीपी इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपकी इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, सो देन वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच एज द राइज इन जीडीपी। Changes in prices, अगर आपके increase in GDP is due to rise in prices and not due to increase in the physical output, जैसे हमने देखा था अभी, then it will not be a reliable index of economic welfare। यानी कि हम जो constant पे वो current पे करते हैं, right? जो नेशनल इनकम और करंट से कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें यही है, चेंजेस इन प्राइसेस तो आ गया, बट दिस ड्यू टू द जीडीपी इंक्रीज हैज इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द फिजिकल आउटपुट। सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिलायबल इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सर्विसेज होती हैं हम प्रोवाइड करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, so these are not means measured or evaluated in monetary terms। Okay, so they are not included in GDP, but it improves the welfare of the people। Okay, so यहाँ पे एक ये भी इसका drawback है। Externalities, externalities is very important। Okay, externalities refers to the benefits, just wait here, just wait। ओके, हियर यू हैव द एक्सटर्नैलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं एक पॉइंट में भी कि आपका एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नैलिटीज रिफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक्टिविटी का या किसी चीज का आपका बेनिफिट या हार्म पड़ रहा है आपको इंडिविजुअल को, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, वो पेमेंट भी नहीं कर रहे, उनको पेनाल्टी भी नहीं है। एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन बेनिफिट्स और अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव। ओके, अगर जो एक्टिविटीज जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं दूसरों को, वो होती हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव जो अच्छाई, लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रही हो जिससे लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा हो, एंड द एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये नेगेटिव है ना, इसकी वजह से क्या है, आपको प्रॉब्लम होती है, इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप हो गया तो पोल्यूशन होगा, उससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑन हेल्थ। ओके, बट यू आर नॉट, दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। ओके, देन एग्जांपल एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जांपल एक पार्क, पब्लिक पार्क बना दिया गया आपके घर के पास, देन वहां पे क्या होगा, लोग जाते हैं जस्ट फॉर फन, रिलैक्स एंड प्लेजर, विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक, दिस इंक्रीज वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। Such external effects do not form part of market transactions। ओके, तो ये मार्केट ट्रांजेक्शन्स का पार्ट नहीं है। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव। मेक इट अ जस्ट important line, this is very important line, as
एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो जीडीपी में नहीं आती हैं, राइट। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है आपका? Rate of population growth. GDP does not consider the changes in the population of a country. If rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will decrease the per capita. ओके, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपका ज्यादा है और जीडीपी कम है तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जाहिर सी बात है आपकी कम हो जाएगी, यही हम शुरू में पढ़ रहे हैं। Composition of GDP. Higher GDP will promote welfare only if increased output comprises of goods of mass consumption and essential goods. यानी कि आपका क्या है, जीडीपी अगर हायर है तो आपका वेलफेयर तभी होगा जब आपका इंक्रीज्ड इन आउटपुट होगा। एंड इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एंड अवेलेबल टू द मास कंजम्पशन। ओके, मास कंजम्पशन में सभी लोगों में प्रोवाइड किया जा रहा है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स, अगर वॉर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर। अगर हम वहां पे कंजम्पशन जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वॉर गुड्स का, सो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी ऑल्सो अफेक्ट्स वेलफेयर। ओके, तो वेलफेयर की तरफ नहीं जा रहे हम, क्योंकि हम प्रोडक्शन किस चीज का कर रहे हैं, वॉर गुड्स का कर रहे हैं। ओके, so with this we come to the end of this topic. Hopefully you understand it very well. Please tell me in the comment section. Okay, and then in the next video we are going to solve the questions and a few questions that have already been done, okay, of national income. But first I'm going to do this, that is national income, आपका जो constant and current prices, nominal GDP, real GDP, price index से related जितने भी questions होंगे मैं पहले ये complete कराऊंगी ताकि students को जो है कोई भी दिक्कत ना आए। एटलीस्ट जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं thoroughly पढ़ाए हैं, और थोड़ा थोड़ा बच्चों को लगता भी है कि नहीं मैम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही, कभी कभी लगता भी होगा, बट स्टिल दैट्स माय पैटर्न टू फॉलो। ताकि मैं चाहती हूँ कि जब भी आप ये उठा के एक भी चैप्टर मेरा पढ़ोगे तो एटलीस्ट यू डोंट हैव एनीथिंग टू मीन्स आपको कुछ लगे ना कि मैंने कुछ मिस कर दिया है। ओके, सो विद दिस नोट आई जस्ट एंड अप दिस theory part also, and hopefully you understand it. Okay, and keep practicing, keep learning. Thank you so much.